सामने की ये दो जो रो बनी है ये हमारे भिक्षु संघ और प्रमुख अतिथियों के लिए बनी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी भिक्षु संघ और हमारे प्रमुख अतिथियों को छोड़कर इस दो रो में जो लोग बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वे दो रो छोड़कर बैठे, दो लाइन छोड़कर बैठिए। धन्यवाद। वो सीक्वेंस अपना दिया हुआ है पूरा। रमेश वानखड़ी जी, अभी ये इनका अनाउंसमेंट दीजिए ना, ये ग्रुप कल्चर श्रीलंका का है। Alright, very amazing performance जो आपके बीच आ रहा है, श्रीलंका ग्रुप परफॉर्मेंस। Ready? Come on, bigger applause, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। And hello everyone, this is anchor RJ Sam। इस beautiful से टाइम को बहुत ही amazing बनाते हुए एक और बहुत ही beautiful performance हमारे बीच आ रहा है, cultural performance या श्रीलंका। Okay, ready? 3, 2, 1 and start.
मैं आई रिक्वेस्ट जो यहाँ के स्टाफ है, लाइट्स पूरी ऑन कीजिए, स्टेज की स्पेशली स्टेज की लाइट्स पूरी ऑन कीजिए। मैं आई रिक्वेस्ट कि जो भी स्टाफ है यहाँ का, स्टेज की लाइट्स ऑन करिए प्लीज। मैं आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन। हेलो, साउंड ऑपरेटर भैया से निवेदन है, कृपया स्टेज की सारी लाइट शुरू कर दीजिए।
May I request Gujarati group, please come on the stage. May I request performance, cultural performance, Gujarati group, please come on the stage. मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी गुजराती ग्रुप है जो परफॉर्मेंस करने वाला है इस ब्यूटीफुल से मोमेंट पे और अपने कल्चर को प्रेजेंट करने वाला है सबके बीच में, प्लीज़ मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग स्टेज पे आ जाइए, आपका ग्रुप स्टेज पे आ जाए. वो उनको देने का है, नीचे गेस्ट को दे देने का है. नहीं, वो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं उन्हीं को देने का है. यहाँ पे बैठने के लिए और कल नहीं, अभी उनको नीचे बैठा लेंगे और कल के लिए भी रखने का है. कल के जो गेस्ट आएंगे तो अभी जो नीचे जो गेस्ट आएंगे ना उनको दे. अभी पूरे नहीं बैठने का, ध्यान में रखना.
हेलो, ये सामने की दो लाइन है, आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया दोनों लाइन खाली कर दीजिए, पीछे हो जाइए। हमारे देश विदेश से आए भिक्षु संघ और हमारे प्रतिनिधियों के लिए ये दोनों लाइन हमने रिजर्व की है। आयोजन कमेटी की ओर से आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया ये दोनों लाइन खाली कर दीजिए। धन्यवाद। Sri Lanka group, please come on the stage. Sri Lankan group. Cultural performance. श्रीलंका ग्रुप का कल्चरल परफॉर्मेंस जो आपके बीच आ रहा है, तो मैं चाहूंगी हमारे इस खूबसूरत से नागपुर में सभी का स्वागत है और इसी के साथ जितने भी लोग हैं, कम ऑन एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आयु बहुवेवा खलसित मुदुन वेवा दोष दुर्वेवा सक्र महबु आयु भुवा सर्वपशास्त्रा प्रत ईश्वराणि सुरविष्णुरंसा सुरसुंदराणि सुरनुतगीता सुरांगनानि अरसाश्रुदोषा जय मंगलानि। इस सीता दे पातुलट में सिरत पाद कवि करमा इस गिनी अंग कल अनविन बंधन कटु दुररदमा
बनय कला अंगुले माल देशो फिरते पाले तमा दोष हर पाला ए अनुवातिंगा सियलो दोष दुररदामा तंदन ताने तंदन ताने तंदन तदन तना दे तन ताने ददन ताने दे तन तदन तना
Check. I want to welcome you all, ladies and gentlemen, national and international guest in India. Come on, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए. Very nice. It's a beautiful moment. खूबसूरत सा टाइम जिसे कहते हैं, यही वो खूबसूरत सा शहर है जो है मशहूर. ये है हमारा ऑरेंज सिटी नागपुर. एक बार नागपुर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम हम एंजॉय करे हैं. ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस 2026. कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए. मैं आई रिक्वेस्ट फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन छोड़ के बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, पीछे लोग सभी खड़े हो जाइए. कम ऑन, जितने भी लोग हैं, कम ऑन. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. मैं चाहूंगी रील मेकर, वीडियोग्राफर जो भी है, ये मोमेंट शूट होना चाहिए. ओके, सो चलिए, एक सॉन्ग है, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. ये सॉन्ग रेडी रहे, ठीक है. तो वी आर इंडियंस, क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है. तो जितने भी लोग हैं अपने अपने मोबाइल फोन के टॉर्च ओपन कीजिए. कम ऑन, लाइट्स ओपन कीजिए. जितने भी लोग हैं, कम ऑन. यस, टॉर्च ओपन कीजिए. यस, कम ऑन, सभी लोग, ईच एंड एवरीवन. यस, कम ऑन, सभी लोग जहां पे भी है. इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट, हर एक पर्सन, क्योंकि ये लाइट्स, ये मोमेंट हमारा है और ये खूबसूरत सा टाइम सबसे स्पेशल होने वाला है. रेडी, सॉन्ग स्टार्ट कीजिए. 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. कम ऑन, शेक करिए. यस, कम ऑन. 1, 2, 3, 4. कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस 2026. जोरदार तालियां. कम ऑन. हाय हाय, क्या बात है. वेरी नाइस. इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. चाहो तो हमको वेरी नाइस. कम ऑन. यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. वेरी नाइस. कम ऑन, तालियां. इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले. दुश्मन के इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा क्या बात है. इंडिया वाले. थैंक यू सो मच. ऑल राइट, सो चलिए अब बारी है. थैंक यू सो मच. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. इतने खूबसूरत से चेहरे और नागपुर के सबसे ज्यादा चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इस खूबसूरत से पीस की शुरुआत और इस इवेंट की शुरुआत हमारे बीच होने जा रही है. Both the bhikshu and national and international guest, please come on this stage. Just because एक beautiful सा time prayer chatting जो हम start करने वाले हैं. So national and international guest, please come on this stage. Yes, please come on this stage, and all bhikshu. आदरणीय भिक्खू आणि भिक्खुणी संघांना मी रिक्वेस्ट करतो की आपल्याला सोबत येऊन बुद्ध धम्म संघाची वंदना करायचं आहे. तर सगळे भिक्खू आणि भिक्खुणी, ऑल द मंक्स अँड नन्स, प्लीज कम्स ऑन द डायस. प्लीज Yeah, please come on this प्लीज stage. प्लीज. Yeah, this side. तुमचे बॅग्स वगैरे तिथं ठेवून द्या. So चलिए, जैसे कहते हैं पूजा की शुरुआत दीपक से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से. ऐसे ही ये शुभ कार्यक्रम, शुभ मोमेंट और ये बंदे खूबसूरत जी, से इधर आ जाओ. कुछ वहाँ पे करने का. इवेंट की शुरुआत होने जा रही है. बंदे कोंडे ने बंदे जी, मैच बॉक्स और वो लाइटर कहाँ रखे थे आपने? कोंडे ने बंदे. हाँ, दिए ना. दो चार ये दे ना, स्टिक दो. ठीक है, करने दो.
सभी की तालियां होनी चाहिए। सगळे बौद्ध भिक्षू आणि भिक्षुनी इथे येऊन जा, आपण एकासोबत वंदना करायची। इकडे या भिक्खूनी, इकडे या। हां, भिक्षुनी त्या साईडला उभे राहा। या साईडला येऊन जा। ज्यांची हाईट कमी आहे ते पुढे या, ज्यांची हाईट जास्त आहे ते मागे जा। गुरुजी तुम्ही इथे या। आणखी पाहुणे बनते पण असतील। बनते कम, प्लीज कम हियर। पीछे और कोई भिक्षु तो नहीं है? या हाँ, थोड़ा लाइट में आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाए। लाइट्स आपके पीछे में कोई और भिक्षु है क्या? अश्वजीत मागे बघ, भंती जी आहेत का? या प्लीज कम, प्लीज कम हियर। चेक चेक। सभी लोग थोड़ा पीछे आ जाए कि आपके फेस पे लाइट आए तो वो प्रॉपर फोटो आ जाए। या हाँ, थोडं सर्व पीछे। मागे मागे। प्लीज गो बिहाइंड, प्लीज। हे लाईटचा थोडं मागे यायचं आहे। हां, ओके। प्लीज रिमूव योर शूज एंड सैंडल्स। आप सभी लोग अपने चप्पल और जूते साइड में उतार दें। हम जो बौद्ध भिक्षु यहाँ और भिक्षुनियाँ जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों को पता है कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियाँ ये सन्मार्ग के ऊपर चलते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं। विश्व शांति के लिए वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज भी बंदे प्लीज रिमूव योर शूज। या और सभी लोग खड़े हो नितिन वो जाइए शूज एक प्लीज। साइड में कर लो, वो एक साइड में, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मैं आई रिक्वेस्ट। पीछे कर लो। यस। वो कैमरेज में नहीं आना चाहिए। श्रीलंकन जो भंते जी है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे में कोई भंते जी नहीं है और ओके। सो हम लोग यहाँ अभी बुद्ध धम्म संघ की वंदना करेंगे। और बुद्ध धम्म संघ की वंदना ही मतलब विश्व शांति के लिए एक प्रार्थना होती है। तो दमानंद पंडित जी कुठे आहेत? हां, या ना पुढे या ना पंडित जी, कम दिस साइड। या भिक्खुनीकडे माइक आहे का? अच्छा, माइक और 2-3 लगेंगे, है क्या माइक? प्लीज स्टाफ माइक दे दीजिए, 2 माइक्स। या फिर कुछ भिक्षुनियाँ वो आपके पास में खड़ी हो जाएंगी। जी वहाँ। जी आ जाए प्लीज। हाँ, 2-4 भिक्षुनियाँ या। उधर चले जाए। तर माईककडे चालले जा। चेक चेक। जे बोलणारे आहेत ना, माताजी तुम्ही कंडक्ट करा ते। जे बोलणारे आहेत ते माईककडे चालले जा। या चेक चेक चेक। माइक दे दीजिए। थोडं त्या साईडला होऊन जा तुम्ही। सर्व हात जोडावे। सर्वांनी मी म्हणेल माझ्या नंतर म्हणा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। त्रिशरण पंचशील सामुदायिक सगळ्यांनीच म्हणायचं आहे। नंतर त्रिरत्नाची वंदना आणि करणीय सूक्ताचा पाठ केला जाईल। सगळ्यांनी सामुदायिक म्हणावा आमच्यासोबत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादं सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन मेन पुय्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पमिलायति यथा इदमे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुतेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपसम्बुध पूजयामि तमोणोदं बुद्धधम्मसङ्घ सुगतपणुभवादातेवो दातु गभेलङ्काय जम्बुद्वीपे किदसपुरवरे नागलोके चतुर्
शरणं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सबठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्मूले निसीनो वा सबारि विजय पातो सबयुतं सतां वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीतेन नमस्वामि बोधिराज नमस्तुते बोधिराज नमस्तुते इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अणुतरो पुरीसधम्मसारथि सता देवमनुसाणं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको एहि पथिको पनायको पश्चातं वेदितभो विहोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो ओजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यापटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अणुतरं तुय्यंखेतं लोकसाति सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचितपरियोदपणं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा
साधू जय भीम, जय भीम, जय भीम. धन्यवाद. थोड़ा जोर से बोले, जय भीम. कम ऑन. यस, अब लग रहा है. प्लीज विल सिट. चला या साइड मास्टर चिक चिक चिक. चिक. सोशली जैसे कहते हैं बौद्ध धर्म पीस का प्रतीक है, शांत का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है. तो ऐसे ही ये टाइम और ये खूबसूरत सा मोमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में. सो चलिए इस मोमेंट का और इस ब्यूटीफुल से टाइम का जिसे कहते हैं ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस 2026. सो चलिए मैं अनाउंस करना चाहूँगी वेलकम सेरेमनी जो स्टार्ट करने वाले हैं हम आप लोगों के बीच में. वेलकम सेरेमनी के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये ब्यूटीफुल सा टाइम वेलकम स्पीच. रमेश वानखेड़े जी प्लीज कम ऑन द स्टेज. वेलकम स्पीच बाय रमेश वानखेड़े, प्लीज कम ऑन द स्टेज. हेलो. हेलो चेक. हेलो. प्रथम इथे उपस्थित असलेले सर्व आपले उपासक आणि उपासिका, आज आपण एक बौद्ध पौर्णिमा पवन पर्वावर आंतरराष्ट्रीय शांती परिषद 2026 इथे आयोजित केलेला आहे. या आयोजितमध्ये आमच्या 5 संघटना आहे. त्या संघटनेमध्ये प्रशील भंतेजी, तसेच नितीनजी गजवे, क्षितिज गायकवाड आणि माझी एक संस्था आहे दीक्षाभूमी एज्युकेशन चॅरिटेबल फाउंडेशन. यामार्फत या शांती परिषदेचा आम्ही 3 दिवस हा कार्यक्रम राबवित आहोत. 15, 16 आणि 17 यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा आहे. आज भट सभागृहामध्ये जे आमचा उद्घाटनाचा सोहळा होता त्यामध्ये बरेच देशातले इथे भंतेजी आणि उपासक आणि उपासिका आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मी त्यांचा शब्दसुमनाने इथे स्वागत करतो आणि आलेले सर्व उपासक आणि उपासिका यांच्या पण शब्दसुमनाने स्वागत करतो. आता या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे की आज 15 तारखेला भट सभागृह इथे उद्घाटन सोहळा पार पडित आहे. त्यानंतर कोराडी येथे एक फैजान खान यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा बुद्धगीत आणि भीमगीतांचा कार्यक्रम आहे. तसेच 16 तारखेला देशपांडे हॉल इथे संघदानाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे.
त्याचप्रमाणे 16 तारखेला इंदोरा मैदान येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमसुद्धा आयोजित केलेला आहे. त्यामध्ये बौद्धगीत आणि भीमगीतांचा जोरदार. त्यानंतर 17 तारखेला तसेच इंदोरा मैदान येथे भीमगीत, त्यामध्ये अभिजित वंजारी यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. आता वेळ इतका झालेला आहे की बऱ्याच वेळपासून आमची जी टायमिंग जी व्यवस्था होती ते खोळंबलेली आहे, कारण की ऊन खूप फार आहे. त्याच्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही. म्हणून माझ्या पुन्हा आलेल्या उपासक आणि उपासिकांना शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि मी इथेच थांबतो. नमो बुद्धाय. जय भीम. प्रास्ताविक स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगी, मोशन स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगी भंते प्रशील गौतम जी को. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए. थैंक यू. ये माइक छोटा माइक चाहिए था. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो भीमाय to everyone. I would like to welcome all the monks, Mahasangha and nuns and distinguished guests from across the world on the occasions of 135th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar and on the occasions of Vaishak Day. We organize World Peace Conference here at Nagpur. So, respected guest from Sri Lanka, मुझे वो लिस्ट दो मैडम, इसमें बराबर लिस्ट माइक में बराबर नहीं बोलते. Check. So, respected monks and nuns, distinguished guests, interfaith leaders, scholars, diplomats, dear brothers and sisters from different parts of the world. On behalf of Sanghakaya Foundation, Global United Education and Social Society, Indo-Asian Metta Foundation, Diksha Bhumi Social and Education Trust, Shatabdi Bahudeshiya Sanstha, I warmly welcome you all to the World Peace Conference 2026, organized on the sacred occasions of Buddha Purnima, Vaishak Day and 135th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, here in Nagpur, the land of Dhamma and social transformation. Today, humanity is progressive in science and technology, but at the same time, the world is facing the violence, hatred, war, terrorism, environmental destructions, mental stress, and social division. We have modern machines, but many people have lost inner peace. That is why this conference is not only an event, it is a mission for humanity. Lord Buddha taught us, Nahi vere na verani, sammanti dankudachanang. Hatred never ends by hatred. Hatred ends only by love and compassion. Gautam Buddha gave the world the message of Karuna. It's called compassion, Maitri, loving kindness, wisdom, and peace. Buddha did not teach violence, revenge, or the blind belief. He taught understanding, dialogues, morality, mindfulness. Today, the world urgently needs this teaching. At the same time, every great religion of the world gives the message of peace and humanity. Like in Islam, peace itself is the part of the world. The Holy Quran teaches mercy, justice, and compassion. The message of Islam is not hatred. The true message is humanity, brotherhood, and respect for all creation. The Quran says that saving one life is like saving the whole humanity. Sikh Dharma, Guru Nanak taught, there is no Hindu, there is no Muslim, all are human beings. Sikh Dharma teaches selfless service, equality, courage, universal brotherhood. Langar is one of the greatest examples of equality in human civilization.
Jain Dharma, Ahimsa Parma Dharma, non-violence is the highest religion. The teaching of Jainism inspired the humanity to live with compassion, not only toward the human, but toward every living being. Parsi, that is Zoroastrian tradition. The Parsi tradition teaches good thoughts, good words, good deeds. These beautiful messages remind us that world peace begins from our own mind, speech, and action. Friends, different religions may have the different ritual language or the tradition, but the essence is the same, like peace, compassion, morality, truth, and human welfare. Today, the world does not need the religious conflict. The world needs the interfaith harmony. The world does not need the extremism. The world needs the understanding. The world does not need the hatred. The world needs the compassion. India has always been the land of spirituality and coexistence. From the Ashoka to Dr. B.R. Ambedkar, this land has carried the message of peace, equality, and the social justice. Dr. Ambedkar embraced the Buddhism because he believed that the peace and equality are essential for the human dignity and the democracy. He reminded us the cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Dear friend, peace is not created only by the government or the conferences. Peace begins within the human heart. If there is an anger in the mind, there cannot be peace in society. If there is a greed in the mind, there cannot be justice in the world. Therefore, through this World Peace Conference 2026, let us all take a place to spread compassion instead of hatred, to promote dialogues instead of violence, to respect all religions and communities, to work for the humanity beyond caste, nationality, or the religion, to protect the nature and all living beings, to create a peaceful and the harmonious world for the future generation. I sincerely thank all the international delegates, monks, nuns, interfaith leaders, volunteers, supporters, and the participants who have come here from the different part of the world. May this conference become a bridge of friendship among the nations and the religion. Let the light of Buddha guide humanity from the darkness to wisdom, from hatred to compassion, and the conflict to peace. So I would like to welcome all the delegates from different part of the world, like Sanghakaya from Sri Lanka, Madama Pagama Assaji Thera, Dr. Lee Chi-ran from South Korea, Bhante Dhammaratna from Myanmar, Thepsakda from Laos, Bhikkhu Tapasi Dhamma from Nepal, and Vijay Dasa Rajapakse, the former minister from Sri Lanka. Most probably the Parekhan will be here only. Then the Raju Taksande sir, maybe he will be here only. Ambalagoda, Venerable Ambalagoda Dhammalankara Thera, he's from Sri Lanka, he's also here. And most respectable Aturliya Ratana Thera from Sri Lanka, he's also here. Mr. M.K. Otani ji, Dr. Sethi, and the member of Railway Board and Government of India, Sabir Bhai, he's from Haji Ali Dargah and Mahim Dargah, he's going to represent here. Sister Animichai from Thailand, and Mr. Vilas from Christian community, he is here to represent. तो मैं आप सब लोगों का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करना चाहूँगा कि ये जो भूमि है, नागपुर की भूमि, ये बुद्ध की भूमि है, ये धम्म की भूमि है और ये भिक्खु संघ की भूमि है। भारतीय इतिहास का वो कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था कि भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि भारत सिखों का है और चौथा कहता था भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में एक आवाज़ पूरे भारत में गूंजी, उत्तर से लेके कश्मीर के भाइयों तक से लेके तो दक्षिण के अन्ना तक के, और पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब में मेरे बैठे आका, सभी को एक ही सूत्र में बांधा और कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है और वो आवाज़ किसी और की नहीं, केवल वो आवाज़ 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा, विदेशों में जाके अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले व्यक्ति और सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इनकी ये कर्मभूमि है, इनकी ये धम्म भूमि है, इसी भूमि पे हम लोग यहाँ आए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ में जो श्रीलंका से आए हुए आतुर्लिया रत्ना भंते जी है, जो वहाँ के 20 साल तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, काफ़ी सारे अलग अलग पोजीशन पे वो थे। तो उनके साथ भी मैं श्रीलंका में काफ़ी दिन तक के रहा। तो वो वहाँ श्रीलंका में बाबा साहेब का एक स्टैचू वहाँ बैठालना चाहते हैं, उनके लिए जोरदार तालियाँ।
दूसरा कि वो अंबेडकर सेंटर के लिए भी हमें वहाँ जगह देना चाहते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक हमारे लिए बहुत आइडियलिस्टिक प्लेस है जहाँ हम जाके धम्म को पढ़ सकते हैं। और काफ़ी साल मैंने श्रीलंका में रहने के बाद मुझे ये भी पता चला कि वहाँ के बहुत सारे लोग इंडिया को काफ़ी एडमायर करते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हिंदी भी जानते हैं। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले मंत्रालय गया था और वहाँ खुद मैंने एक ऑर्डर देखा कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, हम लोग जो बुद्धगया जाते हैं तो वहाँ हमारी बहुत दुर्व्यवस्था होती है। तो यहाँ का एक GR निकला हुआ है कि बुद्धगया में हमें 10 एकड़ जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ देने वाली है और वहाँ एक अंबेडकर भवन एक बनने वाला है। तो इसी तरह से जो हम चाहते हैं कि ग्लोबल पीस, ऐसी सब जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, तो उस इंस्टीट्यूशन से यह आवाज़ लोगों तक के जाए। जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में लिया हुआ है, जैसा कि लंदन का जो घर महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, उसके बाद में इंदू मिल भी जो बना रहे हैं वो, या फिर दिल्ली का जो 26 अलीपुर रोड पे जो उन्होंने बनाया है, तो वो सब एक वर्ल्ड पीस सेंटर के लिए एक स्थापन हो, ऐसा हम लोगों का मत है। दूसरा कि हमारी जो वर्ल्ड पीस के लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अभी सेंसेक्स चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उस सेंसेक्स में आप सब लोग बुद्धिस्ट लिखे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कास्ट में हम क्या लिखे, लेकिन बाबा साहेब चाहते थे कि हम लोग कास्ट फ्री सोसाइटी हम लोग बनाना चाहते थे। तो अभी उसमें अगर हम लोग चाहे तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कास्ट लिस्ट कुछ कॉलम भी रहे जहाँ पे हम लोग कास्ट मेंशन ना करें, क्योंकि हमने कास्ट लिस्ट सोसाइटी भविष्य में बनाना है। और इसी मैदान में एक समय यहाँ पे राम कथा हुई थी और राम कथा में किसी ने कहा था कि लोगों ने 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध हूँ। मुझे पता है कि एक लेडीज़ को कितना पेन होता है बच्चे पैदा करने के लिए, तो क्या 4 बच्चे पैदा करना सही है? मैं लेडीज़ लोगों से पूछना चाहता हूँ। नहीं है ना? तो हम, जैसे मैं यूरोप अमेरिका में भी रहा हूँ, तो उन लोगों का जो विज़न रहता है वो ये रहता है कि हम लोग बच्चे ही पैदा ना करें, जो लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं उसको हम एडॉप्ट करें। तो ये विश्व शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हमारे बच्चों को तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर हम लोगों ने समाज के बच्चों को भी एक्सेप्ट करना है, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे, किसी भी समाज के रहे, उन बच्चों को भी हमने अपना बनाना है। तभी हम एक जो बाबा साहेब का जो समाज है, जो एक मैत्री करुणा का समाज है, वो हम लोग बना सकते हैं। हम लोग हमेशा अपने लिए, अपने फैमिली और अपने समाज के लिए सोचते हैं। हमने ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो यही बाबा साहेब का हमारे लिए एक मिशन है। और हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान किस लिए जाना जाता है? भूटान जाना जाता है वहाँ पे हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, मतलब वहाँ पे जो खुशहाली है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे पास में उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ है, हर चीज़ है हमारे पास में, लेकिन हम खुशी नहीं है, हम लोग सुखी नहीं है। बाबा साहेब ने जो हमें जो धम्म जो चक्र चलाया था, वो दुख चक्र चलाया था कि धम्म चक्र चलाया था? बताइए मुझे। हाँ, धम्म चक्र का अर्थ क्या होता है? सुख चक्र होता है ना। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जब मैं देखता हूँ उनके चेहरे को, तो बहुत दुखी दिखते हैं, है ना। तो हमें हमारे आचरण से लोगों को बताने का है कि हमने जब बुद्धिज्म में आए हैं तब से हम लोग बहुत सुखी है। तो आपको उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जितना आप बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करेंगे, तो बाबा साहेब को जो आप डीजे लगा के या फिर नाच गा के आदरांजलि देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदरांजलि सबसे अच्छी रहेंगी कि उसको आप प्रैक्टिस में वो सब चीज़ें अगर लाते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये वैसाख डे के उपलक्ष्य में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहेब की जयंती हर कोई मनाता है पूरे भारत में, बराबर, हमारे समाज के लोग खास करके। लेकिन बुद्ध जयंती के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये उसका एक छोटा प्रयोग है कि हम लोग बुद्ध जयंती के समय भी घर से बाहर निकले और बुद्ध का जो मैसेज है, पीस, लव, कंपैशन, वो सब लोगों तक के हम लोग पहुँचाए। तो कल काफ़ी अच्छा वेलकम डिनर हुआ हमारा एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट पे। आज यहाँ प्रोग्राम है, शाम को महादुला कोराडी में कल्चर प्रोग्राम है। कल भिक्खु संघ को हम संगदान कर रहे हैं। अगर किसी को संगदान के लिए मदद करना है तो वो भी आगे आ सकते हैं। कल
देशपांडे जो हॉल है वहाँ संगदाना का प्रोग्राम रहेगा। और शाम को कल और परसों 16 और 17 को हम लोगों ने इंदौरा मैदान वहाँ कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं। 16 तारीख को जो भी एनिमिचाई सिंगर जो है वो भी आएंगे थाईलैंड से, उनका शो रहेगा। उसके बाद में अपने राजेश बुरबुरे और उनकी जो लड़की है धनश्री बुरबुरे, उनका प्रोग्राम रहेगा। और 17 तारीख को अभिजीत कोसंबी आएंगे। तो ये शाम को 16 और 17 शाम को इंदौरा मैदान पे ये प्रोग्राम रहेगा। तो इस तरह से ये रूपरेखा है प्रोग्राम की। तो मैं चाहूँगा कि सभी इस प्रोग्राम में आप लोग ज्वाइन करें। टोटल 7 से 8 प्रोग्राम्स इस 3 दिनों में है। तो मैं आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, और जो भी गेस्ट लोग आए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सत्यानंद बंती जी भी आए यहाँ पे, जिनको मैं सिर्फ फ़ोन कॉल पे बुलाया था। अभय बंती जी भी यहाँ पे आए हैं, और भी महेंद्र बंती जी है। काफ़ी सारे भिक्षु लोग यहाँ आए हैं। हमारे MK ओतानी जी है जो फ़ोन कॉल पे यहाँ पे आ गए। और आप सब लोग सिर्फ फ़ोन कॉल पे नहीं तो आपने सिर्फ बैनर और व्हाट्सअप पे देख के यहाँ पे आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सो मच बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। May I request Ramesh Wankhede ji, please come on the stage. स्वागत के लिए, ठीक है। सो चलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मदम पगामा आसाजी थीसा, महानायक थेरो श्रीलंका, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्टेज पे आ जाइए, महानायक थेरो श्रीलंका। या प्लीज कम ऑन द स्टेज। रमेश वानखेड़े जी बुके के साथ रेडी रहे। नेक्स्ट इनके स्पीच के बाद लेना है, ऐसे ही वेलकम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, कमान। संघनायक फ्रॉम श्रीलंका, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमो बुद्धाय। Permission from Mahasangha and all religious leaders, honorable invited guests and devotees, blessings and auspicious greetings. This land of Bharat is the sacred land, highly revered by Buddhists around the world, as it is the birthplace of our supreme teacher, Lord Gautama Buddha. The place where he attained enlightenment and the place where he attained Parivartan. On the occasion
commemorating these three sacred events of Lord Buddha's life, I extend my blessings and best wishes. On behalf of the Dharma Shakti organization, composed of religious leaders representing the 4 religions in Sri Lanka, formerly Buddhism, Hinduism, Christianity, and Islam, as it is chairman to the Sanghakaya Foundation for organizing the Buddha Purnima World Peace Conference. Furthermore, I am deeply pleased that is Buddha Purnima conference is being presented as an World Peace Conference with the participation of religious leaders from all faiths. The fundamental philosophy of our supreme teacher, Lord Buddha, was the middle path through the 4 noble truths and the noble eightfold path. It was he who taught us by example cooperation, coexistence, and the resolution of conflicts among nations and religious leaders. Accordingly, I see the organization of such an interfaith conference through the unity of all nations and all religious leaders as a meaningful realization of Buddhist philosophy. We must never forget the dedication and sacrifice made by the Burgos Bodhisattva like scholar Dr. Ambedkar, who emerged from Diksha Bhumi in the Nagpur region in spreading Buddhism and bringing the message and solace of the Buddha Dhamma to hundreds of thousands of people. Therefore, I emphasize that the world Buddhist community holds boundless respect and love not only for Lord Gautama Buddha but also for Dr. Ambedkar. Especially it was Harat Mahinda Thero, the son of Emperor Asoka, who brought the message of Buddhism from Bharat to Sri Lanka. Likewise, I believe it is not wrong to respectfully refer to Dr. Ambedkar, who fulfilled such a noble mission as the Anubaddha Ambedkar of the Indian Buddhist people. At this moment, as the Mahanayaka Thero of the Amarapura Mahanikaya and 27,000 Buddhist monks in Sri Lanka, I wholeheartedly extend our gratitude and best wishes to Government of India, led by the Honorable Prime Minister, for sponsoring this noble conference, and to the Sanghakaya Foundation for organizing these activities for excellently. I bless that all the activities of this conference may become successful in every aspect. May world peace prevail. Dhanyavad, Namaskar, Jai Boom, Triple Gems bless you.
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की, तालियां बहुत कम लग रही है मुझे। सो चलिए, मे आई रिक्वेस्ट स्मिता वाकड़े, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्मिता वाकड़े, प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस, तालियां होनी चाहिए। एंड मे आई रिक्वेस्ट delegate VVIP delegate speech by Dr. Lee Chi-ran, South Korea. Please come on the stage. Big round of applause. तालियां जोरदार होनी चाहिए। सो चलिए, देने आ रहे हैं नितिन गजबिये जी, वेलकम करने आ रहे हैं नितिन गजबिये जी। तालियां। This one? Both. Okay. Good afternoon, most venerables, distinguished guests, Dhamma brothers and sisters, ladies and gentlemen. I have prepared the paper a little bit long, so I don't want to spend time much. I'd like to say a few words freely. First of all, I would like to express my heartfelt thanks on behalf of Korean Buddhists to organizers, committees, those who are concerned. Well, I think it's very difficult to have an international conference. You know, you have to put a lot of energy into it. Well, Buddhism came to East country via Central Asia about 2,000 years ago. So now Chinese Buddhism has been 2,000 years. Korean Buddhism 1,700 years. And 6th, 7th century, Chinese monk, Tipitaka Master Hyunzang, he came to India to learn what's the reality of Indian Buddhism. So he started and he had been many places. So according to his books, we know how Indian Buddhism was flourished. Many viharas, many monks, like Buddhist country. And also 8th century, there was a name called Hecho. He's from Korea, Korean monk. He came to India through ship, and he wrote record 6 countries in India. So we know through his books how Indian Buddhism was flourished. Everywhere, viharas, everywhere, monks, Theravada, Mahayana. Well, I think the time is limited. I don't want to say long. So, 13th century, Buddhism was disappeared in this country. I think, as far as I know, more than 700 years. However, Buddhism
came back to India again. This is an amazing event, especially modern Indian Buddhism. We must mention Bhavesa Ambedkar. He declared conversion into Buddhism in Diksha Bhumi. 500,000 people became Buddhist. So we call him Bodhisattva, Bodhisattva. So, first of all, I'd like to shout, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. He brought Buddhism, Navayana Buddhism. Of course, we need traditional Buddhism, but he brought Navayana, new type of Buddhism. Recently, I wrote a book, Indian Religion and Buddhism, centering around Dr. Ambedkar's Navayana movement. So, in Korea, China, Japan, people don't know much about Dr. Ambedkar, but 2006, I introduced Buddhist organization based on the Nagpur, Pune, Mumbai. So Korean Buddhist Foundation gave that foundation Peace Award with prize money. So now, at the time also I wrote biography of Dr. Ambedkar. So now in Korea, people and Buddhists know who is Bhavesa Ambedkar. We need not only in India, we need also Dr. Ambedkar's guidelines of Navayana Buddhism. That's why I opened a small center in Seoul, Korea, to spread out Dr. Ambedkar's Navayana Buddhist movement. So I think time is limited. So I have a lot of stories. For the first time I came to India 47 years ago. At the time, I was a Thai monk. I became a Korea 60 years ago, but I wanted to have experience in Thailand as a Theravada monk. So after that, I came to Sri Lanka, India, so 47 years ago. At the time in India, I went to pilgrimage and Buddhist place like Sarnath, Bodh Gaya, Kushinagara, Shravasti, but not many temples, not many monks. But now, everywhere, Indian Buddhist Viharas, Indian venerables, nuns. So Buddhism is a revival again. So I think there are many reasons, but especially because of Dr. Bhavesa Ambedkar. That's why I think now everywhere, Viharas, more monks, so he brought Buddhism again in this land of Buddhism. So I hope this conference, Global Peace Conference, will be successful. And also, Nagpur is a very important place. So I hope Nagpur should be the center for world Buddhism. Thank you very much. Once again, I'd like to shout, Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! Thank you. Thank you so much. Come on, big round of applause. तालियां होनी चाहिए, come on. All right, so चलिए next Kiran Mahalle, please come on the stage. Kiran Mahalle, stage पे आ जाइए, welcome करने के लिए.
Sushma Ratandeep Rangari. Please come on the stage. Sushma Ratandeep Rangari. Yes, please come on the stage. So चलिए welcome करने वाले हैं Dr. Bhante Dhamratna Myanmar. Please come on the stage. तालियां होनी चाहिए सभी की. Come on. Please come on the stage, sir. VIP delegates speech. First welcome and then speech. Please come. तालियां बजती रहनी चाहिए. Come on सभी की. बुके बुके भी दीजिए पहले. Dr. Bhante Dhamratna Myanmar. Thank you so much, sir, for coming. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Venerable Bhikkhu Sangha from different country, special guest of honor of the day, foreign delegates, administrative person, organizer committee, media persons, my brother and sister, and all the guests in this auditorium. It is a very, very grateful and thankful pleasure to be part of this Global Peace Conference 2026 at Nagpur on the occasion of Vaishak Celebration Day in the land of Diksha Bhumi, the land of revival of Buddhism in the 21st century. India is the land of enlightenment, and Buddha teaching is spreading to the world from this land. But nowadays, India is not recognized as a Buddhist country. So we have to think about it. Why we didn't get proper teaching of Buddha? The teaching of Buddha emphasized that peace, harmony, compassion, and loving kindness are not abstracts to read or to chant, but it is a practical tools, practical things for transforming the human mind to creating society or better world. We are the human. The reason for violence, war, many things happening in this world. Human nature are like ocean, never completed their needs. So we people have to make our needs very limited sources to sustain the world, to be happy and peace. Universal humanitarianism is essential to solve the global problems. Compassion and loving kindness, only the way and the pillar of the world peace. All world religions have to come forward to build for world peace. Each individual has a universal responsibility to shape institutions to serve human needs. Today, the situation in the world gives us cause for concern if we continue the problems we face from the short-term perspective. Future generation will face many difficulties. We must recognize that we all want to be happy
and none of us want to feel the pain. Therefore, with a clear sense of the oneness of humanity, we must work together for benefit of our human brothers and sisters. Peace will only be achieved if disputes are settled through dialogues and respect to each other, not through the violence in the use of weapons. I hope and pray that current conflict, Europe, Middle East, and some part of the Asian country, which are causing such extensive suffering and loss, the million lives, and it will come to the end very soon. I believe that each of us can contribute to making this world a better place now and in the future. I appeal to everyone who share a concern for listening the world peace to cultivate a sense of universal responsibility and appreciation that only on the basis of loving kindness will lead a meaningful life and make our society more compassionate. Let us be compassionate and kind heart, not just our friend and family, but everyone in this world. Thanks to the organizer team, thanks to the Sanghakaya Foundation, thanks to the Indometa Foundation to invite me on this special occasion. मैं भिक्षु संघा नागपुर के लोगों और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस ओकेशन पे यहाँ बुलाया और मुझे आपके समक्ष भगवान बुद्ध के धर्म के संदेशों को आपके समक्ष रखने का मुझे अवसर दिया। और मैं इस मंच से आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप भगवान बुद्ध के धर्म को मानना ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए इस उपदेशों को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ आपके जीवन में खुशी प्राप्ति होगी, शांति प्राप्ति होगी और आप एक अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. Come on, तालियां होनी चाहिए जोरदार. All right, may I request सुषमा रतनदीप रंगारी, प्लीज रेडी रहे आप स्टेज पे. वेलकम बुके मोमेंटोज लेके. VIP delegates, please come on the stage. Dr. M.K. Otani ji, India, please come on the stage. Big round of applause, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. सुषमा मैडम रेडी रहे आप लोग. तालियां, come on, जोरदार तालियां. Thank you so much, Otani ji. Okay, may I request Dr. Sethi, Member Rally, Board Government of India, please come on the stage. इनका welcome करने आ रही है स्मिता वाकड़े. Please come on the stage. स्मिता वाकड़े जी ready रहे. तालियां होनी चाहिए, come on. तालियां बजती रहनी चाहिए, come on.
Thank you so much, sir. All right, may I request क्षितिज गायकवाड़, आप स्टेज पे आ जाइए. वेलकम बुके एंड बोर्ड लेके. ओके, सो चलिए, may I request Tep Sakta Fetselth, please come on the stage from Laos. Please come on the stage. तालियां होनी चाहिए इनके लिए. इनका वेलकम करने वाले हैं क्षितिज गायकवाड़ जी. तालियां डबल होनी चाहिए जी. Global Peace Conference 2026. Check. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghakaya. Respected, distinguished guests, honorable leaders, venerable monks, teachers, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. It is a great honor for me to speak today at this Global Peace Conference. Today, I would like to speak about inner peace, world peace. In today's world, many people are facing violence, stress, conflict, and misunderstanding. True peace does not begin outside. It begins inside the human mind. Today, the world faces many challenges. War and violence, hatred, and discrimination, mental stress and depression, anger and misunderstanding, environmental misdestruction, even though technology is growing, peace in the human's heart is still weak. Why problems happen? According to Buddhist teaching, conflict begins from greed, hatred, ignorance. When people cannot control anger and selfishness, suffering increases in society. In a peace begins within ourselves. If our mind is calm, our action become peaceful. Meditation and mindfulness help people develop vision, compassion, and wisdom. Compassion is a universal language. When we respect and help one another, peace can grow between community and nations. Peace education, children and young people should learn kindness, non-violence, respect, forgiveness. Peace education is very important for the future of humanity. Moral living, moral values are the foundation of peace. In Buddhism, the 5 precepts teach people not to kill, not to steal, sexual misconduct, not to lie,
not to harm others, or not to drink alcohol. Ethics create trust and harmony in society. Peace is possible when we work together. Every small act of kindness can change the world. We should not wait for others to create peace. Peace begins with each one of us. In conclusion, world peace begins with inner peace. Through compassion, wisdom, mindfulness, and moral living, we can build a more peaceful world for future generations. Thank you very much. Sappe satta pavantu sukhi tatta. May all beings be happy. Nati santi param sukhang. There is no happiness higher than peace. Thank you. Mohotanyawat. Thank you so much, sir. तालियां बजती रहनी चाहिए, come on. Alright, so चलिए आगे बढ़ते हैं beautiful सा time को और भी special बनाते हुए. May I request किरण महाले जी, please come on the stage. किरण जी stage पे आ जाइए. एक बार तालियां होनी चाहिए sir के लिए क्योंकि वो welcome करने वाले हैं VVIP guest का. Bhikkhu Tapassi Dhamma from Nepal, please come on the stage. तालियां होनी चाहिए. सेंटर में हमारी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट है यहाँ पे, तालियां कंटिन्यू होनी चाहिए. यस इम्पॉर्टेंट है आज के इवनिंग के इस मोमेंट पे आपकी तालियां, जस्ट बिकॉज एंकरिंग बहुत कम है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मस्ती नहीं कर सकते हैं. इस मोमेंट को ख़त्म भी जल्दी करना है, ऑलरेडी हम लेट है, तो मैं चाहूँगी कि इस इवेंट की शोभा आपकी तालियां बढ़ा सकती है. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय. Good evening, distinguished, respect Mahasangha, respect delegates, ladies and gentlemen. It is both an honor and a responsibility to stand before you today to speak about one of the humanities' greatest aspiration, global peace. Before I begin my speech, I would like to focus on Dr. Baba B.R. Ambedkar and his contribution to Buddhism,
Buddhism in India, all the South Asia, and all also. Dr. B.R. Ambedkar service to Buddhism were not limited to religion alone. He transformed Buddhism into a movement for human dignity, equality, and social justice. So, his vision and courage, he gave hope and identity to millions and re-established Buddhism as a living force in the modern India. Today, Ambedkar is remembered not only as the architect of the Indian Constitution, but also as a greater Buddhist revivalist. His teaching on continue to inspire movement for equality, justice, education, and human rights across the world. His famous message, he gives the many message for us. Educate. Dr. Ambedkar was born into socially oppressed community and experienced discrimination throughout his life. He strongly opposed the caste system and untouchability. After years of study and reflection, he conclude the Buddhism offer the values of equality, compassion, reason, thinking, and justice. He believed that Buddhism was a religion based on morality, wisdom, and humanity rather than discrimination. Peace is the more than the absence of war. It is the presence of justice, understanding, compassion, and opportunity. A peaceful world is one where children can dream without fear. Where the nation cooperate instead of compete distinctly, and where differences are respected rather than feared. Today, our world is deeply connected. What happened in the country can affect millions across the globe. We share the same planet, the same ocean, the same climate, and ultimately the same future. Yet despite our progress in the science and the technology, conflict
inequality, and division. Continue the challenge of humanity. Global peace began with a simple through every human life has an equal value. Peace is not by the shop and supermarket. Peace is everybody, human being inside our heart. So, with all in make the grow the peace, we need unity in the all in human being unified. We did not the discrimination. No in caste. We each other give the peace, love. It is a Buddhist law. So, however, peace cannot be achieved by the government alone. It is required to the participation in every individual. Peace starts in our homes, in our school, in our communities, and in the way we speak to another, a kind, all, and open mind, and willingness to listen can become the foundation for the lasting and understanding. Education also plays a vital role in building peace. When people are educated, they are empowered to think critically, reject extremism, and contribute positively to society. Young people especially must be encouraged to become leader and tolerance, innovation, and unity. At the same time, global peace requires courage. The courage to forgive to negative and to choose collaboration our conflict. History has shown us that hatred divides, but humanity progresses when we are stand together. As leaders, professional, and global citizens gather at this conference, we each have a role to play. Let us use our voice not to spread fear. To by the inspired hope, let us build bridge instead of wall. Let us choose empathy, our prejudice, and partnership, our division. The dream of global peace may seem ambitious, but every great achievement in the history began with a vision and determination to pursue it. If we work together with sincerity and commitment, peace will not remain morally an idea. Can become the reality. In closing, I would like to have to you with this thought. The friendship between India and Nepal is based on trust, cultural, religion, shared history, and human connection. Their mutual understanding continues to promote peace, cooperation, and regional
harmony in South Asia. But by respecting each other's sovereignty and strengthening cooperation, both countries can continue building a brighter and more prosperous future together. Peace is not destination we reach someday. It is a choice we make every single day. May we choose wisely. May we choose humanity. And may we choose peace. I will thank for all organizers, our Sanghakaya Foundation, all members, our Venerable Prasil, Gautam, Pante, and all organizers. We're thankful for the invite for the Nepal to who's invite for us. And we are first time I will come to this beautiful Nagpur city and city. So thank you for Pante Brazil, all our members. We are humble, thankful your inviters. Thank you. I will all our members and devotees, you prosper your life, happy for Buddha's blessing for everybody, for every members. Thank you. Sabbitiyo vivajanto sabbarogo vinasatu mate bhavantantarayo sukhi dikhaiko bhava bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena sada sothi bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much. Your inspiring words, sir. Thank you. तालियां होनी चाहिए, come on. May I request Nitin Gajbia ji, Indo-Asia Metta Foundation. Please come on the stage. Mr. Nitin Gajbia ji, please come on the stage. And Ramesh Wankhede ji, आप भी स्टेज पे आ जाइए. तालियां होनी चाहिए इनके लिए. अब जिनका स्वागत करने आ रहे हैं VVIP गेस्ट, प्लीज मैं चाहूंगी आप स्टेज पे आ जाए. विजय दास Rajpakshe from Minister Sri Lanka. Hello. Please come on the stage. तालियां, come on. तालियों में मजा नहीं आ विजय रहा है. दास राजपक्षे जी के लिए तालियां होनी चाहिए. मिनिस्टर श्रीलंका. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा. आवाज नहीं आ रही है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, सम्राट अशोकांचा, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, सावित्री आई फुल्यांचा, आई रमाईंचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. एक और बार जोर से बोले, जय भीम.
और थोड़ा जोर से, थोड़ा हाथ ऊपर करके. Very nice. Namo Buddhaya. Good evening. The most venerable Mahanayaka Thero and all the venerable Buddhist monks, venerable Buddhist nuns, officers, office bearers of Metta Foundation and Sanghakaya Foundation, distinguished invitees, dear friends. First of all, I extend my thanks and my gratitude for the invitation extended to me by Mrs. Mita Wakade and Mr. Nitin Gajabiye of Indo-Asian Metta Foundation, along with the Venerable Devamita Thero. I take this as an opportunity to address you in this holy month of Vesak. The whole world is celebrating. Today we are gathered here at the center of the Buddha Bhumi. In the month of Vesak, the Prince Siddhartha was born in Nepal, the Lumbini Park. Buddha was enlightened in Bodh Gaya, in India. The Buddha passed away in Kushinagar on a Vesak day. Therefore, this is a very important month. We are celebrating Vesak of the Buddha all over the world. When you consider the dissemination of the Buddhism in the world, it didn't take within few months or within few years. It happened in several stages. The first stage is when Buddha was enlightened, he disseminated the Buddhism together with first 60 disciples all over the India while walking to the towns and all the remote villages. By doing so, the Buddhism was well established in India. India was a Buddhist country. That was 2,600 years ago. Subsequently, 260 years later, when King Chandasoka, who was invading every part of Bharata and killing millions of people, that is to build his empire in the whole Bharat Desh. Later on, when he realized the violence, the war is only destruct the nations, the peace is the one which can give solidity, solace to everybody in the world. He understood it by listening to a smallest monk at that time, the monk Negro, who was at the age of 8 years. Later on that he became a Buddhist. According to the world history, all historians accept that the most righteous king or emperor that had lived in the whole world was King Asoka, Emperor Asoka. During the period of Dhamma Asoka, that there was a Dhamma council that is to ensure the Buddhism will prevail until the Maitri Buddha will enlighten in the future. That is why, after having a Buddhist council, he decided to disseminate, send delegates to 9 Asian countries, which includes Sri Lanka.
Sri Lanka is a blessed country for the reason the Buddha visited outside India only to Sri Lanka, not once, 3 times, thrice he visited Sri Lanka. When King Dhamma decided to send delegates to the neighboring 9 countries, he chose his own son, Most Venerable Arahant Mahinda Thero, as to lead the delegation to Sri Lanka during the period of King Devanampiya Tissa, from which time the Buddhism was established in Sri Lanka. Thereafter, that is the second stage, the Buddhism was disseminated in Asia. The third stage that commenced in Sri Lanka. Thanks to Sri Lankan monks, Buddhism is saved. The Buddhism is disseminated to whole the world. It was prior to first BC century. The Buddhism was scripted. They wrote on books. During that period, there were no books. Our monks wrote the Buddhism on oral leaf. That is called Tripitaka canon. That Tripitaka canon was wrote 2,100 years ago. That was in Pali. Some of the other Buddhist countries had taken it away and they translated into Sanskrit. Mostly the countries of Mahayana, that they read the Tripitaka, which was written by Sri Lankan Buddhist monk and translated into Sanskrit in their countries. That is why that the Buddhism was saved. If not for it was written, Buddhism should have been disappeared long ago. Then thereafter, although the Buddhism was started in India, the Buddhism had disappeared in India. Indian didn't know what the Buddhism is. Indian didn't know there was Buddha enlightened in India. That fact came to know because of our ancestors. As you know that Sri Lanka and India, as well as many other countries in Asia, we were dominated by Europeans for a period of 450 years. They established their laws, they established their religions. They did not allow even to practice our native religions like Buddhism and Hinduism until that we gained the independence. During the colonial period, that there was a dialogue in between Buddhist monk and Catholic priest. That is the beginning of the present journey of the Buddhism. That is famously known as Panaduravada, a neighboring city of Colombo. As a result of that dialogue or the debate, which was, the publicity was given every part of the world, there was a prominent figure, Colonel Henry Olcott, who did not believe any religion in the world. He believed only the humanity. He had his own Theosophical Society in New York. When he heard about this debate, at certain reality has come out of the Buddhism, he came in search of that to Sri Lanka and he became a Buddhist. Later on that he started the Buddhist school in Sri Lanka. During that period we were not aware where the Buddha Gaya was. Anagarika Dhammapala, one of the greatest sons of Sri Lankan soil, he came in search of Buddha Gaya to India. He is the one who found the present Buddha Gaya.
that it had been covered with the sand. Finally, when he wanted to establish that is the place where the Buddha was enlightened, there were many issues. He got involved in litigation, went up to the Supreme Court of India. Finally, Buddhist people were able to get their rights, their inheritance to Buddha Gaya. Thereafter, we had our World Buddhist Conference in Kandy 1950, for which the most reverend leader of India, Dr. Ambedkar, was present in Kandy 1950. At that meeting, at that conference, there was a resolution moved. It should be taken to the United Nations to declare the Vesak Day as a day of celebration. That is the meeting where the Dr. Ambedkar participated. After his finishing his mission in Sri Lanka, he came back to this Nagpur and he declared, together with 600,000 people, that he embraced Buddhism. That is the beginning of the Buddhism in Nagpur. All the Indians should have the honor to Dr. Ambedkar, because of him, the India is saved as one country up to date. That is because his wisdom, that is because of his intelligence. He is the father of the Constitution of India. He is the architecture. Because of his intellect, that he drafted the Constitution in such a way that India will remain as one country forever. If not for the India should have been scattered to many countries as it happened in Russia or somewhere else. Therefore, that's we all grateful to Dr. Ambedkar. I had the opportunity to deliver his memorial lecture in 2016 after your present Prime Minister, Honorable Narendra Modi, who is having the highest respect to Dr. Ambedkar, declared his birthday, 16th April, as a memorial day, during which period that I was able to deliver that lecture in 2016 in Bombay University. Now this topic of this, your conference is the peace. I saw on the screen which says there won't be any survival for the human being without the peace. What is the peace? The peace is what is interpreted as a part of Dhamma. We being Asians, we always follow Dhamma, whether it is Buddhism, Hinduism, Jainism, Sikh, Muslim, whatever the religion that we believe in, we know what is needed for the humanity is the Dhamma. That means then you will realize something has gone wrong. Where did we go wrong? We went wrong, we went on a wrong path because all our countries were dominated by Europeans. In the West, there is no Dhamma. In the West, there is only justice. Dhamma and justice has a big difference. The justice depends on your capacity to argue. It's a logical matter. That is your logical ability
but it doesn't know it doesn't mean it is the truth. But in Dhamma, Dhamma begins from the deep recess of your heart. In justice, you can cheat the people. In Dhamma, you can't cheat anybody without cheating your conscience and your mind. There is no dual playing in Dhamma. But however much the Europeans say that they follow and they admire justice, the concept of justice is a failure. Just to say examples, 400 years ago, in 1618, there was a war waged by the Protestants against Catholics in the same religion, two sects. Protestant attacked the Catholics. 1/4 of the European population was killed. Then you know the World War the First in 1909 or 11 that started after the Archduke of Hungary was killed by Serbian. As a result of one prince in one country, the World War started. 18 million people were killed. Why? They don't understand Dhamma. They believe in justice, but it doesn't deliver justice. You know there was a third world war also. 60 million people were killed. 60 million, not a small amount. Why? How it happened?